Hi, I'm Manisha. I'm a wellness entrepreneur and I have different certifications in yoga, in breathwork, meditation, personal development, and basically everything that you need to up-level your life. And आज हम सीखेंगे because अभी winters है. Winters में the main problem that happens winter में is workout करना है but we are too lazy. And then because it's so cold, you don't feel like getting out of the bed. How can yoga help you in that? Yoga can help you in that because योगा आसन सिर्फ बॉडी पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो अंदर से बॉडी को क्लेंस करते हैं. द मेन प्रॉब्लम इन कोल्ड एनवायरनमेंट एंड कोल्ड टेम्परेचर इज़ वो जो कांस्टेंट खांसी रहती है, ज़ुकाम रहता है, बहुत कोल्ड एंड कफ होता है सबको, एंड ऑल्सो दैट फिल्म जो अंदर लाइक स्टक लगा रहता है. सो योगा कैन हेल्प यू विद दैट. ऑल्सो इन कोल्ड टाइम हमारा इम्यूनिटी ऑल टाइम लो पे होता है बिकॉज बहुत सारा डेंसनेस होती है एयर में एंड बहुत जल्द बीमार होते हैं. सो हम जो योगा पोजेज आज करेंगे वो बेसिकली आपके किडनीज़ को हेल्प करेगी, ऑल्सो आपको इम्यूनिटी को रेव अप करेगी एंड ऑफ कोर्स आपका ब्रीदिंग को नॉर्मल करेगी, जिससे आपका चेस्ट ओपन रहेगा. खांसी, ज़ुकाम एंड एनी काइंड ऑफ फिल्म बिल्डअप यू विल सी कि वो अपने आप गायब हो जाएगा. हमने ऑलरेडी सूर्य नमस्कार सीख लिया है. सूर्य नमस्कार आप पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं. सो सूर्य नमस्कार इज़ अमेजिंग फॉर विंटर्स. सो आज हम 3 टाइप ऑफ आसन्स करेंगे. एक पूरा फ्लो होगा और दूसरे 2 आसन आपको सीखने को मिलेंगे. ऑल्सो रिमेंबर ये सारे आसन एम्प्टी स्टमक करने हैं. सो एटलीस्ट 4 आवर्स ऑफ खाने के बाद, एंड 2 आवर्स मिनिमम है बट 4 आवर्स रियली आइडियल है. सो जॉइन मी ऑन द मैट. लेट्स डू सूर्य नमस्कार. Come to the front of the mat, both the hands in the center of the chest. Take a deep breath, back bend. Exhale, forward. Inhale, right leg goes back, look up. यहाँ पे breathe in करना है. Also knee और ankle का alignment please check करना because दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए. Exhale, plank pose. Drop your knees, drop your chest. Inhale, cobra pose. Exhale, downward facing dog. Inhale, right leg वापस. Exhale, both the knees together. Inhale, back bend. Exhale, samasthiti. Now let's move into the bow pose. Bow pose जो है वो आपके चेस्ट कैविटी को ओपन करता है, आपकी ब्रीदिंग को रियली नॉर्मल एंड डीप करता है. ऑल्सो एनी काइंड ऑफ कंजेशन वो साथ में निकलना शुरू हो जाता है. इसके लिए आपको योगा मैट चाहिए होगा. योगा मैट पे आप अपने फ्रंट पे लेट जाइए. लाइंग डाउन हियर, बेंड योर नीज. पहले एक एंकल, फिर एक दूसरा एंकल. इनहेल, लिफ्ट अप. एक्सहेल, कम बैक. पॉइंट क्या आपको माइंड में रखना है कि ये जो नी है और ये आपका थाई है, दैट हैज टू लिफ्ट अप. द चेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द थाई एंड द नी इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो इनहेल एंड एक्सहेल. अबाउट 3 to 5 टाइम्स करेंगे. इन केस ये बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड यू कांट रीच फॉर योर एंकल्स, यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस. So start out small and then see आपको क्या ठीक लगता है and then you can build it up from there. The next pose that we'll do is again going to be lying down in front. It's called Locust pose. Locust pose के लिए this is an easier variation. Lie down. Hands will be besides the body. Feet in line. Inhale, lift. Exhale, down. Inhale, lift. एक्सेल डाउन. इसका एक और वेरिएशन है. हाथ को अपने चिन के नीचे रख लीजिए. जस्ट लिफ्ट द लेग्स एंड डाउन एंड देन जस्ट लिफ्ट द चेस्ट एंड डाउन. और इफ यू थिंक दैट यू कैन डू दिस, यू कैन डू इट टुगेदर एंड डाउन. All the 3 poses you will notice help you open the chest. Because every time you expand the chest, आपका chest cavity, again as I said, breathing को regulate करता है, आपका congestion को
दूर करता है. All the asanas over here work on kidneys to really help your body normalize the temperature of the body. Thank you for joining us. I hope आपको ये 3 आसन बहुत पसंद आए and आप इनको ज़रूर try करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please subscribe, like, share and also comments में बताइए what do you want to see next. Thank you for joining me. This is Manisha on Trends 9.